So hello students, पार्ट 1 वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, हाउ वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अदर. So this is the second part of complex number where we will solve different problems based on complex numbers. So let's see different problems. So problem number 1, where we have to simplify this expression. So for the simplification of this expression, let's see what all things we can use that is from imaginary number का properties. So बहुत simple सी चीज़ है बच्चों, ये जैसे कि ये रूट -16 है, तो रूट -16 को हम लिख सकते हैं रूट 16 इंटू रूट -1, क्योंकि नेगेटिव इन रूट इज समथिंग विच यू नो जो कि हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको ईजी बनाने के लिए हम इसको आई के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो रूट 16 इंटू रूट -1 प्लस 3 इंटू ये रूट -25 है, तो इसको भी रूट 25 इंटू रूट -1. सिमिलरली दिस वन एज रूट 36 इंटू रूट -1 एंड लास्ट टर्म नेगेटिव इंटू रूट 625 इंटू रूट -1. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि जो रूट -1 है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. एंड एट द सेम टाइम रूट 16, जो रूट 16 है वो होता है 4 एंड रूट -1 इज आई, सो दिस इज 4i प्लस 3 इंटू रूट 25, ये रूट 25 है जो होता है 5, again root -1 is I plus root 36 is 6 and root -1 is I minus root 625 होता है 25 into root -1 again I. So देखिए अभी कितनी सिंपल एक्सप्रेशन बन गई है. अब इसको हम इजीली और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 4i plus this will be 15i plus 6i minus 25i. अब देखिए ये जो सिंपल सा टर्म बन गया है, ये सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए हम एक टर्म ला सकते हैं जो कि है 4i plus 15i 19 plus 6 is again 25 and 25 minus 25i is 0. So this is what we will get. This is the simplified form of this lengthy expression which is 0. Okay, this is how these expressions can be simplified with the help of root -1 का value which is I, imaginary number. Now next is find conjugates. Find conjugates of given numbers. तो बहुत सिंपल है, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें कॉन्जुगेट चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिंपली इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वही हम चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं. सो इमेजिनरी पार्ट अगर आप इसे देखेंगे 3 - i को, तो 3 - i में इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो नेगेटिव है. सो कॉन्जुगेट इज सिंपली 3 + i. सेम वे इन दिस पार्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन इज अगेन नेगेटिव, सो इसको हम पॉजिटिव बना देंगे. -√5 एज इट इज बिकॉज ये रियल पार्ट है, प्लस √7i एंड दिस वन, दिस नंबर, दिस इज द इमेजिनरी नंबर, राइट. यहाँ पे रियल पार्ट इज नॉट देयर, मतलब रियल पार्ट इज 0, बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट रियल पार्ट बिकॉज हमें रियल पार्ट का साइन कुछ चेंज करना ही नहीं होता, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करना है. तो इमेजिनरी पार्ट है √-5, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √5i. अब इमेजिनरी पार्ट है √5 जिसका साइन है नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5i. एंड सपोज आपके पास है नंबर 3 एंड आपको बोला गया कि इसका कॉन्जुगेट लिखना. अब जो 3 है दिस इज प्योरली रियल नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो 3 का कॉन्जुगेट विल बी 3 ओनली, बिकॉज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि कॉन्जुगेट इज obtained by changing the sign of imaginary part. That's it. Okay, so this is how conjugates can be obtained. Now next part is where we will express the given expression in the form of a plus bi. तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज़ सिंपली दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका ही एक और एग्जाम्पल है. सो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट,
then second term of first bracket into second bracket. Then let's multiply. 1 into minus 2 is minus 2 plus 1 into I is I. Then plus minus, so 2i into 2 is 4i, and then plus 2i into plus I will be plus 2i square. Now minus 2 plus I minus 4i will be minus 3i. Now we know that I square is minus 1. So here we need to mention that I square is minus 1. So this will become minus 2. So minus 2 minus 3i, this will be again minus 2. Real part and added with real part. So minus 2 is minus 4 minus 3i. So this is in the form of a plus bi. ये a plus bi के फॉर्म में है. और अगर आपको पूछा जाए कि a और b की क्या वैल्यू है, तो a is simply minus 4 अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे रियल विथ रियल, and b is simply minus 3. So this is how we can find a and b का value. Now next question where we will see division भी है complex numbers का and add भी किए हुए हैं. तो let's see how to simplify this and how to write it in the form of a plus b है. So यहाँ पे simply आप cross multiplication करेंगे पहले तो, right? So this will be 3 plus 2i into 2 plus 5i, in between plus sign, so plus 3 minus 2i into 2 minus 5i whole divided by, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 minus 5i into 2 plus 5i. अब जो मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एंड इन दोनों को भी करना है. सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. दिस विल बी 3 into 2 6 plus 2i into 2 is 4i, then it will be 3 into 5i which will be 15i plus 2i into 5i is 10i square. Same way we will be multiplying these two also. So this will be 6 minus 4i minus 15i plus 10i square. This is what we will get. Whole divided by, now this is in terms of a minus b into a plus b, and we know formula for that, which is a square minus b square. So this will be simply 2 square minus 5i whole square. अब देखिए ये है constant. So 6 plus 6 can be added. This will give you 12. Then term with I and I. See, plus 4i will be cancelled with minus 4i. Plus 15i will be cancelled with minus 15i. Now 10i square plus 10i square will be 20i square. This is how it is simplified. Divided by 2 square is 4 minus 5i whole square. Now 5 का square होता है 25 and I square is I square. Now I square की वैल्यू हमें पता है. I square क्या होता है? minus 1. I square is minus 1, तो वो यहाँ पर हम substitute करेंगे. That will be 12. I square is minus 1, so this will be minus 20 upon 4 plus 25. देखिए अब यहाँ से I का टर्म ही गायब हो गया क्योंकि वो कैंसिल हो गया, राइट. सो 12 minus 20 is minus 8 upon 29. This is purely a real number, right? अब इसे हम जो है वो minus 8 plus 29 plus 0 times I इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो इस फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a जो है वो है minus 8 by 29 and b is 0. So this is how complex numbers can be multiplied. This is how the difficult expression of complex number can be expressed in the form of a plus b. So our next question where we will be finding a and b, and this is the given equation. So let's see how to do that. So left hand side is product of two complex numbers. तो यहाँ पे हम multiply करेंगे इन्हें. So first term of first bracket and second bracket will be multiplied and we'll get 2a plus ai. Then second term of first bracket and this second bracket will give you 2b plus bi. We will bring this side, that is left hand side, in the form of a plus bi, and this side is already in that form,
and then we will be comparing it. Okay, so this is what will be the left hand side and right hand side will be as it is. जैसे दिया है उसे वैसे ही लिखना क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. अब ये जो रियल पार्ट है 2a and 2b, this will be 2a plus 2b will be together and imaginary parts will be together. So इसको हम लिख सकते हैं a plus b times I, where I is common, and this part will be as it is because as I said it is in the standard form. Now next important step will be we will be comparing real part with real and imaginary with imaginary. So if you will observe left hand side, this is the real part and this one is the imaginary part for left hand side, and for right hand side b plus 1 is the real part and 10 plus 2a is the imaginary part. So real part will be compared with real part and imaginary will be compared with imaginary part. So we will get 2a plus 2b is equal to b plus 1. Means when two complex numbers are equal, so when they are equal, real part will be equal to real part and imaginary part, that is a plus bi, will be equal to imaginary part 10 plus 2. So this is how we got two equations and easily we can solve these two equations. This is 2a plus 2b equal to b plus 1. So we'll take similar terms on one side. So this will be 2a plus 2b minus b is equal to 1. And here same way, similar terms on one side. So we'll get 2a minus b plus 10 is equal to 0. Or you can write this as minus 10. So this will be 2a plus b is equal to 1. This is first equation. 2a minus a is a minus b is equal to minus 10. So this is first equation and this is second equation, and we know how to solve two equations in two variables. Here let's add 1 and 2. So if you will add 1 and 2, plus b minus b will be cancelled because they are with opposite sign. 2a plus a will become 3a equal to 1 minus 10 will be minus 9, and this will give you value of a which is minus 9 by 3 matlab minus 3. So if we got a, to find b we will substitute for a in either of the equation, either first or second. So let's substitute in first. So if you will substitute a equal to minus 3 here, this will be minus 6 because 2 into minus 3 is minus 6 plus b is equal to 1. So this will give you b is equal to 7. This is how we can find a and b for this given question, for this given complex equation. Now let's see how to solve this kind of problem where it is 1 plus abi is equal to 3 minus 2i. Okay. So now if you will observe this equation, then a plus bi is in denominator. So whenever complex number is in denominator, to bring it in the standard form, we always multiply numerator and denominator by conjugate of denominator. जो denominator का conjugate है उससे हम multiply करते हैं. तो conjugate is a minus bi. इससे हमें numerator और denominator दोनों को multiply करना है कुछ इस तरह से. एंड जो आपका राइट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगा बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है a माइनस बी आई. ये जो है a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी आई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2i. So a minus b I is equal to, अब i स्क्वायर जो है वो -1 होता है, -1 वो वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 माइनस 2i. अब जो है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड, इसको हम दूसरे वे से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम which is 1 upon a plus bi is equal to 3 minus 2i, and we want to find a and b.
See students, if we will proceed with the left hand side, मतलब अगर हम left hand side को लेते हुए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके प्रोसीड करते हैं तो वो मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. So there is another method which we can follow to solve this, to find a and b. So let's see the second method, and those who want to learn the first method also, they can let me know in the comment box. I will teach you first method also, but second method is comparatively easy. So let's see which is the second method. अब देखिए बच्चों, 1/a+bi जो है वो 3 - 2i है. मतलब अगर आपके सामने कुछ इस तरह से अगर दिया हो 1/x is y, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं x is equal to 1/y, राइट. तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे. दिस थिंग कैन बी रिटन एज a plus bi is equal to 1/3 plus 2i. This is 1 and c. Sorry, not plus, it is -3 minus 2i. अब हम क्या करेंगे कि a plus bi को हम इसी तरह से रखेंगे और ये जो 1/3 minus 2i है इसको हम a plus bi के फॉर्म में लेकर आएंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3 minus 2i, उसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. सो उसका कॉन्जुगेट है 3 plus 2i. So 3 plus 2i with numerator and with denominator will be multiplied. Then a plus bi. 1 into this complex number is same 3 plus 2i, and this is in the form of a minus b into a plus b, which is a square minus b square. So this will be 3 square minus 2i whole square. So a plus bi, which is left hand side, is equal to 3 plus 2i. Now 3 square is 9 minus 2i whole square is 4i square. A plus bi, which is LHS, is same as is equal to 3 plus 2i. अब देखिए यहाँ पे जो i square है इसकी वैल्यू होती है -1. This we know. So when we'll substitute i square is equal to -1. तो minus will become plus, so this will become +4. 9 plus 4. This will be 9 plus 4. मतलब a plus bi is equal to 3 plus 2i upon 13. अब इसको जो है हम separate कर लेंगे. We will write it in the form of a plus bi. So this will be 3/13 plus 2/13 times. Now we can compare real part with real, imaginary with imaginary, and that will give you a का value which is 3/13 and value of b which is 2/13. This is how we can find a and b with the help of this simple method, by using this simple thing. So thank you so much. These are the problems which we had seen for the complex numbers. Okay, next time we will solve some more problems from complex numbers.